Basically, MAANG companies के लिए like this is very important. They want people like who have that problem solving ability. And because you know that like how they are actually dealing at like very big scale. And one person who is working in Quora or any other companies, he will get into another product-based company very easily because they know that he has actually already dealt with like lot of good problems he has solved. For example, अगर आप किसी shopping big bazaar में जाते हो, okay, and now you want to buy one shampoo, okay, and now the big bazaar is providing different मतलब different you can say buckets to you, okay, एक small size bucket है, a bigger size and a bigger trolley. Now suppose you want to buy that shampoo. अब आप इन तीनों में से कौन सी बकेट चूज करोगे? फिर स्मॉल साइज, मीडियम साइज और या बिगर ट्रॉली? What do you think? Hello guys, welcome back to Talk Nerdy to Me podcast, and here we only talk nerdy, not dirty. Right, so today we have with us Varun, who is a seasoned DSA instructor, has been also like part of companies like EA Sports, and right now he's handling the back-end track at Masai. Hi Varun. Yeah. Hi Kishan. Yes, so before we go on to discuss, so the today's topic is why are MAANG companies really hell-bent on DSA? Before we move on to the topic, can you please give us a brief overview of yourself? Like you have worked in EA Sports and you chose to teach DSA at Masai. So why did you make that decision? Why did you choose to teach DSA? Okay. So basically after completing my bachelor's, so at that time what happened, like I did my bachelor's like in a normal college. So and you already know कि एक normal college में क्या होता है, okay, you don't take things very seriously and you spend a lot of time, like it's just that you are not focusing on your career part. तो वहाँ पे भी basically I was I did my BTech in computer science. तो वहाँ पे इतना serious था नहीं. तो later what happened, last year में realize हुआ कि अब यार मतलब कंपनीज आने वाली है. तो उस समय यार अपने लिए ना इन्फोसिस, विप्रो कंपनीज लाइक यू कैन से थिंक कि वी पीपल लाइक वी यूज्ड टू ड्रीम ऑफ लाइक बीइंग इन दैट दोस कंपनीज. सो एट दैट टाइम आई मेट फ्यू पीपल एंड थ्रू विच आई जॉइंड अ गेट कोचिंग इंस्टीट्यूट. ठीक है, वो किस्मत की बात थी बिकॉज एंड द टीचर विच आई गॉट देयर, ओके, सो लिटरली ही एक्चुअली चेंज द डायरेक्शन. And it's something like because that teacher is actually from IIT and he was a professor actually. So he used to run his coaching institute. So वहाँ पे जब मैंने अपना गेट कोचिंग किया, फिर फाइनली पहले साल मतलब नहीं हुआ, इट्स समथिंग, फिर सेकंड ड्रॉप, मतलब फर्स्ट ड्रॉप किया, फिर सेकंड ड्रॉप किया, फाइनली थर्ड अटेम्प्ट में लाइक एबल टू क्वालिफाई IIT हैदराबाद. सो पॉइंट वहाँ पे क्या हुआ, लाइक व्हेन आई वेंट इनटू दैट कॉलेज, सो वहाँ पे लाइक द डिफरेंट बैकग्राउंड, बिकॉज वहाँ पे जो भी बीटेक के स्टूडेंट्स आते थे उनका इट्स समथिंग लाइक दोज आर एक्चुअली जेई रैंकर्स, ओके, मेन एडवांस लाइक गुड रैंकर्स. सो वहाँ पे बेसिकली एवरीवन इज एक्चुअली वेरी इनटू स्टडीज एंड लाइक डूइंग थिंग्स एंड उनका पूरा दिन अपने प्रोजेक्ट्स इन कामों में भी जाता था, काफी सारा जाता था. तो इट्स समथिंग लाइक वो हमसे एमटेक वाले स्टूडेंट से 10x एफर्ट उनका रहता था. Ambitious folks. रियली मतलब. और वहाँ पे जाके ना, और ऐसा नहीं कि सर वो पढ़ाई कर रहे हैं, मस्ती नहीं करते हैं, कंप्लीट मस्ती उनकी रहती है, लेकिन जब असाइनमेंट रहते थे तो बिल्कुल खतरनाक वाले असाइनमेंट. तो ऐसे ही हमारे साथ भी वो बैकग्राउंड आया एंड वी वर डूइंग असाइनमेंट एंड ऑल, एंड मतलब वो प्रेशर, तब वहाँ पे हमें पहली बार पता चला प्रेशर होता क्या है. फिर एक साल बाद जब प्लेसमेंट्स कंपनीज आई, तो प्लेसमेंट के ड्राइव जो होती है दिसंबर में, उससे 3 महीने पहले ही लाइक वी started like preparing these DSA coding questions, starting lead code and all. So everyone is actually into it. सब लोग मतलब लाइब्रेरी में जाके it's something like solving problems and doing things. तो अब I was also like involved in that. वो क्यों हुआ? क्योंकि environment वैसा था. Finally companies came, the first day, we used to call it day 0. Google, Microsoft, all these companies used to came, then day 1, day 2, day 3. Finally at some point I got like hired in EA. So it's something like I never planned कि I want to be in EA, but I want to be in a like software development company. And वहाँ पे basically I cleared that round and then finally I got into like EA. So अब जब वहाँ पे EA में I was working, so I was like EA का एक अलग ही passion था, because दिमाग में रहता है ना कि भाई गेमिंग कंपनी है, मतलब वो हम लोग भी गेम खेलते रहते हैं. We do think like what if we create, we work on these games, we create these games, right?
So that's like a dream. राइट उस समय जब इंटरव्यूज भी दे रहे थे तो उन्होंने 5 इंटरव्यूज लिए थे, तो 5वें इंटरव्यू में फाइनल एचआर था, लेकिन अलग ही एनर्जी थी बताने की, लाइक बचपन से गेम खेले हैं यार, मतलब ये वाली चीज. सो वहाँ पे ना इट्स समथिंग लाइक दैट एनर्जी एक्चुअली हेल्प्ड. एंड एक दिमाग में भी इमेजिनेशन होती है लाइक गेमिंग कंपनीज विल क्रिएट गेम्स एंड ऑल. इवन इफ आई टेल टू पीपल. So later what happened when I was working like in the EA, so then I got to know okay what are the teams. I was in a group team. What is group? Group is something like जब आप games खेलते हो तो उसमें एक feature होता है you can create your own groups. Okay, so I was in a group team, and then later what happened? Basically when we joined, we were the first software engineer. पहले EA पे software engineer नहीं थे इंडिया में. So they actually first time they did the hiring in India. Not it's something like office is already there. Okay. But the point was that कि उस time पे टेस्टिंग इंजीनियर थे, बाकी इंजीनियर, बट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे, तो उन्होंने दे डिड द हायरिंग एट दैट ईयर. So they had the foreign resources, but not in India. They didn't have software developers. हाँ, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर्स नहीं, बट ऑफिस पूरा सेटअप था हैदराबाद में, लाइक द कंपनी इज देयर एंड एवरीथिंग वाज हैपनिंग. सो वहाँ पे बेसिकली वी गेट इनटू टीम, दे गिव अस द ट्रेनिंग, और सारी ट्रेनिंग क्लाउड में, बैकएंड में, स्प्रिंग बूट, जावा, लाइक एवरीथिंग वी वर डूइंग. And later what happened, like when I was working there, so after spending 6 months, then it's something like I used to get bored with the things which I was doing. So at that time I thought, क्योंकि उस समय आपको पता होगा like एक अलग ही पीक चल रहा था, people were actually, there were a lot of hiring was happening back in 2020. A lot of hiring was doing. Google like, is hiring, Facebook is hiring. Crazy hiring, bro. Like crazy hiring. Happening. People are getting hired at 40, 36. Like it was average, basically. Yeah, right. So at that time, I also thought, like, why can't try for those? Because my batchmate was also going for Google and all. So I started applying for like these companies and giving interviews and all. So at that time, what happened? कि मेरा probation खत्म होने से पहले, like I left EA and I was applying for different companies, giving interviews. So then suddenly on my way, I got this profile, Masai. Okay. And in Masai, like there was a DSA, like engineer, curriculum engineer basically. तो मेरे को उस टाइम पता चला कि अच्छा ऐसा चीज होता है, इट्स समथिंग, बिकॉज आई यूज टू टेक वन सेशन विद स्टूडेंट, तो कॉलेज में भी इट यूज टू हैपन, हेल्पिंग देम ओके विद DSA प्रॉब्लम, बिकॉज अपना वो बैकग्राउंड था ही. सो बट नेवर थॉट कि ऐसा भी एक तरह का प्रोफाइल लाइक होता है. एंड एट दैट टाइम मैंने उसको इग्नोर कर लिया था, क्योंकि मेरा फोकस सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मतलब SD पे था. बट लेटर व्हाट हैपेंड कि वन ऑफ माय फ्रेंड टोल्ड मी, अरे यार भर लो ना, भरने में क्या प्रॉब्लम है. तो मैंने कहा ठीक है भर लेते हैं. और हुआ क्या, इट्स समथिंग कि कंपनी प्रोसेस तो बाकी चल ही रही थी, बट सडनली मसाई प्रोसेस स्टार्टेड नेक्स्ट डे. और उन्होंने कंटिन्यूअसली 3-4 दिन उन्होंने लाइक इंटरव्यूज हैपन, DSA इंटरव्यूज हैपन. फाइनली 4th day आई गॉट द रिजल्ट. And then when I entered into Masai, तो I was the 50th employee, like 50. Okay. तो फिर उसके बाद से जर्नी शुरू हुई. Then I was liking that concept. I was teaching DSA and literally मतलब because teaching the like 50, 100, 200 student is a different feeling. So that's why I liked it. Yeah, I mean, even the students, I've talked to a lot of students and alumni of Masai, and they all vouch for your teachings. Like, I don't know, what do you give them? कौन सा शक्कर घोल के पिलाते हैं आप? They all like keep taking your name for specifically for DSA, right? So one interesting thing you mentioned that people at that time in college, they were like looking for companies like after your BTech, they were looking for companies like TCS and Infosys, which is completely different right now, right? People now want to go away, sort of get placed in product-based companies more than TCS or Infosys or other Wipro kind of companies, right? So it's actually that's the topic today. Like, why exactly is DSA so important in product-based companies, specifically MAANG companies like Meta, Amazon, Apple, Netflix, Google? Why is it important? So before we move on to that, just for the viewers, I would like to just take a few examples from you, like what exactly is data structure algorithm. जैसे हम लोगों ने सुना है कि हर जगह पढ़ते हैं हम लोग कि हाँ, अगर तुम्हें प्रोडक्ट बेस्ड में जाना है, अगर तुम्हें एप्पल में जाना है, गूगल में जाना है, तुम्हें DSA करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा तुम्हें DSA. बहुत से लोग स्किप भी करते हैं. लॉट ऑफ पीपल स्किप लर्निंग DSA. मे बी इट्स डिफिकल्ट और मे बी दे डोंट फाइंड इट नेसेसरी इनफ. लाइक मे बी दे थिंक टेक्निकली इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ वेब डेवलपमेंट. तो आप एक बार लाइक मेरे को एक्सप्लेन करो एज अ नॉन टेकी. आई एम आस्किंग यू व्हाट एग्जैक्टली इज डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम एंड with a few examples if you can. Okay, got it. So basically I just want to give you one analogy. मतलब एक example के through I just want to explain this. जब हम स्कूल में थे ना, like when we were in school,
So we used to learn physics and maths. Okay. So at that point, when I was reading the H.C. Verma book, so one line was mentioned there: mathematics is the language of physics. So physics is if you want to learn physics, then you need to understand maths. So because under all the derivations are happening, okay, they are actually doing the differentiation, integration, and all these kinds of things are happening in while solving the equations and all. Like deriving something, f equal to ma, like जो भी formulae derive करने हैं वहाँ पे all these operation were mathematics were getting applied. But उसके लिए because what assumption while like if I'm talking about any particular concept, Newton's second law and all their derivation, वहाँ पे उनका assumption क्या है that you know mathematics. Because other than that, then you cannot understand this. So imagine that you are directly doing development. You're directly doing development, but without understanding this. It's something like you're learning physics without understanding mathematics, and you're saying कि मैं physics पढ़ते पढ़ते मैं समझ लूंगा. Okay. उसी समय जो integration है मैं उसी समय समझ लूंगा कि basically integration. Then so that is the main problem. So if I like you told me like what is exactly data structure and algorithm. So basically, like the one thing is programming. Programming is something like you are writing syntax, variables, loops, conditionals, lot of things are there. Okay. But when we talk about DSA, it's all about problem solving. So data structure matlab, it's something like we want to store something. So data structure is something like storing data. Algorithm is now you have stored the data somewhere. Now you will apply your brain to solve that problem statement. Like it depends upon the problem statement. So our programming language actually provide different data structures. तो वो हमें काफी डेटा स्ट्रक्चर देते हैं, जैसे एरेज दे देते हैं, ठीक है, स्टैक्स दे देते हैं, क्यूज दे देते हैं. तो अब वो डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली हम डिफरेंट सिनेरियो में यूज करते हैं. अब जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी शॉपिंग बिग बाजार में जाते हो, ओके, एंड नाउ यू वांट टू बाय वन शैम्पू, ओके, एंड नाउ द बिग बाजार इज प्रोवाइडिंग डिफरेंट मतलब डिफरेंट यू कैन से बकेट्स टू यू. Okay, एक small size bucket है, a bigger size and a bigger trolley. Now, suppose you want to buy that shampoo. अब आप इन तीनों में से कौन सी bucket choose करोगे? Small size, medium size और या bigger trolley? What do you think? I think like if I'm buying a sachet, then I won't carry a bag. Right. If I am buying a bottle, then I might carry the smallest, Right. the smallest one. Very like right answer actually. Because I was expecting you would say कि small bag. Because उसके लिए जरूरत भी नहीं है. My hands are enough. Yeah. Even how you made that decision, because you know ना कि मेरे पे जितना डेटा मैं जितना भी चीज लेके आने वाला हूँ उसके लिए इतना ही काफी है. Structure. Okay. So basically you are making that decision. Similarly in terms of real world, जब भी हम कोई applications बनाते हैं तो we know कि what kind of data will be holding, किस टाइप के डेटा पे हम काम करेंगे, कितना डेटा हमें चाहिए होगा. उसके अकॉर्डिंगली if I have the knowledge of basically data structure, then I know that कि मेरे को ये data structure चाहिए होगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एरेज इज समथिंग लाइक अ ब्लॉक्स, लाइक सम ब्लॉक्स, और उस ब्लॉक्स के अंदर वी कैन पुट सम डेटा. वैसे ही हमारे 2D एरेज होते हैं. 2D एरेज लाइक अ मैट्रिक्स. तो ये हमारा यूज कहाँ होता है, जैसे आप बुक माई शो देख लो, एंड इफ यू आर डूइंग रेड बस बुकिंग, फ्लाइट टिकटिंग, everywhere in the background they are doing this using that data structure. Even like Excel or sheet is example, can be an example of 2D array if I'm not wrong. हाँ, मतलब that is actually an application. मतलब हाँ, आप उसको उसकी तरह ले सकते हो, concept की तरह कि okay, the matrix kind of a form. This is हाँ, that is kind of 2 dimension. The second thing is stacks. तो स्टैक में बेसिकली क्या होता है, एक जैसे घर में मम्मी बर्तन धोती है ना, तो एक के ऊपर एक बर्तन रखती रहती है, तो स्टैक बनता रहता है. तो स्टैक में जब मम्मी बर्तन धोने निकालती है तो ऐसा नहीं करता कि लाइक शी विल नॉट डू दैट थिंग कि फ्रॉम द मिडल शी विल पिक अप, मतलब एक थाली निकाल ली क्योंकि सारा स्टैक तो ऊपर से ही उठा सकती है. तो यही कंसेप्ट हमारे एक एप्लीकेशन में लगता है ब्राउजर्स में. जब आप ब्राउजर में बेसिकली ब्राउजर को आप मम्मी समझो, तो ब्राउजर को आपने बोला google.com खोलने के लिए, तो google.com खोला, फिर यूट्यूब, तो ब्राउजर क्या कर रहा है, गूगल नीचे रख दिया, उसके ऊपर यूट्यूब रख दिया, उसके फिर जब बैक दबाते हो तो वो मम्मी की तरह क्या करता है, पीछे का जो भी था जो टॉप में है उसको उठा के आपको दे देता है, फिर टॉप में उठा के आपको दे देता है. So that is actually stacks. Actually मैंने अभी एक बहुत interesting video देखा था. Some instructor on Instagram, you know, like crazy Instagram these days. Some instructor was taking the example of to basically tell stacks. So you have like not watched the movie Animal. I have watched the movie Animals. मैं scene होता है, trailer में भी वो scene आया था, where Bobby Deol is just lying on Ranbir Kapoor on the road, right? So this guy was taking that example and they were like, okay, this is a stack.
So he was lying, and yeah, so that's why amazing, हाँ, मतलब बहुत brilliantly he just creates like that. He just takes meme and then explains it in the concept. Okay. Interesting. So that is like these are the basically data structure. So sorry, you asked like what is actually data structure and what is the second one? Sorry. So like why, what exactly it is, and why do we really need it basically? Why, I mean, हाँ, so एग्जाम्पल इफ यू कैन टेल मी एग्जाम्पल कि रियल लाइफ एग्जाम्पल में जैसे कोई ऐप का एग्जाम्पल लेके या फिर आप जैसे आपने बुक्स माई शो बोला तो उस तरीके का एग्जाम्पल लेके आप अगर बता सकते हो. हाँ, तो बेसिकली जैसे मैंने बोला स्टैक के लिए हमारा ये ब्राउजर पे यूज होता है. ब्राउजर पूरा स्टैक पे चलता है. वैसे ही हमारी एक होता है ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर. ग्राफ हमारा बेसिकली ये सोशल मीडिया एप्लीकेशन, क्योंकि सोशल नेटवर्क में क्या है, कनेक्शन है, मतलब मेरा आपसे रिलेशन है, क्योंकि मतलब हम फ्रेंड्स हैं सोशल मीडिया में, फेसबुक में सपोज आपका किसी से रिलेशन है, तो हमारा ना आप देखो कि हम दोनों के बीच में एक एज बन रही है. आपका किसी के साथ एक ग्राफ सा बन रहा है हम लोगों के बीच में. ठीक है, तो बेसिकली अगर मुझे आपके सारे फ्रेंड ढूंढना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लाइक हमें एक एल्गोरिथम लिखनी पड़ेगी, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर तो बन चुका है. क्योंकि इसको प्रेजेंट आप कैसे करोगे, आप 2D एरे में आप ऐसे मैट्रिक्स में प्रेजेंट नहीं कर सकते कि आपके कितने फ्रेंड हैं. हो सकता है आपके 100 फ्रेंड हो. तो बेसिकली ये एज, ये वाला सबसे बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर है. यही डेटा स्ट्रक्चर हमारे गूगल मैप्स में भी यूज होता है, क्योंकि एक सिटी दूसरी सिटी से कनेक्टेड होगी, तो वो उसको भी हमने एज बोल दिया. तो मैं ये जानना चाहता हूँ इस सिटी से दूसरी सिटी का मतलब अगर मैंने पूछा तमिलनाडु से, तमिलनाडु में किसी चेन्नई से बेसिकली इफ आई एम आस्किंग देहरादून का मतलब कितना शॉर्टेस्ट पाथ है, तो आप निकले यहाँ से तमिलनाडु से, तो वो क्या करेगा, जो भी बीच बीच के सारे रास्तों को कनेक्ट करेगा. तो ये हमारा डेटा स्ट्रक्चर हो गया. बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, हमें एक प्लेटफॉर्म दे रहा है जहाँ पे यू कैन ड्रॉ थिंग्स. नाउ व्हाट इज एल्गोरिथम. एल्गोरिथम आप डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर लगाते हो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने मैप्स की बात बोली, अगर आप डिस्टेंस देख रहे हो तो आप गूगल मैप्स में आपको ये चीज पता चल जाएगी. अगर आप चेन्नई से देहरादून का डिस्टेंस देख रहे हो, गूगल मैप्स आपको 3 पाथ दिखा देगा कि ये 3 पाथ है, आपको जो लेना है चूज कर सकते हो, ये शॉर्टेस्ट वन है. अब एल्गोरिथम सोचने का काम करता है, तो उसके लिए ना हमारी स्टैंडर्ड एल्गोरिथम्स हैं, जैसे डाइजेस्ट्रा, बेलमैन फोर्ड. तो ये एल्गोरिथम बेसिकली किसी ने बना रखी है. ठीक है, जैसे डाइजेस्ट्रा ने बना रखी है, बेलमैन फोर्ड ने बना रखी है, स्टैंडर्ड एल्गोरिथम्स है. तो आपको ये समझ में आता है कि ये सारा काम एल्गोरिथम ब्रेन पार्ट का काम करती है. डेटा स्ट्रक्चर सिर्फ काम करता है हमें डेटा रखने के लिए. ये वही वाली बात है कि आपको चाय बनानी है, सारा सामान मम्मी ने रख दिया, वो डेटा स्ट्रक्चर. लेकिन जब स्टेप्स लगाने, स्टेप बाय स्टेप, क्या स्टेप फॉलो करेंगे ताकि चाय बन जाए. सो दैट इज बेसिकली ऑल डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम. सो बेसिकली देयर इज वन थिंग कि जब हम लाइक एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट था जो कंपनीज इंटरव्यूज में काफी पूछती है. अच्छा. एंड दैट इज कि अगर सपोज मैं इफ आई गिव यू 9 बॉल्स, ठीक है, और सारी बॉल्स सेम वेट की है एक्सेप्ट वन ऑफ द बॉल, मतलब एक बॉल ऐसी है जिसका वेट डिफरेंट है, लाइक हैवियर है. नाउ व्हाट यू नीड टू डू, आई एम आल्सो गिविंग यू एक तराजू, एक वे बैलेंस, मतलब जिसमें दोनों साइड यू कैन पुट, हाँ यू कैन पुट दीज वेट्स, और आप चेक कर सकते हो कौन कितना भारी है दो में. नाउ यू नीड टू, अब आपको उस तराजू को यूज करना है, उस वे बैलेंस को आपको यूज करना है, बट आपको उसको मिनिमम टाइम्स यूज करना है, और आपको ये पता लगाना है कि वो हैवियर, लाइक विच वन इज द हैवियर बॉल. राइट. ओके, देन जस्ट थिंक, आई एम जस्ट आस्किंग क्वेश्चन टू यू, लाइक लेट्स जस्ट थिंक कि आप क्या अप्रोच अप्लाई करोगे. put me on the radar. So okay, so I mean one approach obviously would be to like keep all the balls, I mean one by one, but you are saying minimum repetitions, right? तो मतलब जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ हम लोग ये कर सकते हैं कि 9 balls you said, right? तो 9 balls में if we can make like 3 triplets, 3 अलग अलग बॉल रख के ऐसे, और 3 ट्रिपलेट्स रख के, फिर नाउ वी हैव द 3 बॉल्स है. सो नाउ इस 3 बॉल में से अगर हम लोग 2 बॉल उठा के तराजू पे रखते हैं, एंड इफ द वेट इज सेम, वी विल कीप द नेक्स्ट बॉल असाइड, राइट? वी डोंट नीड टू वे दैट, विल कीप दैट असाइड. सिमिलरली हम लोग बाकी 2 ट्रिपलेट्स पे भी सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे. तो इन द एंड विल हैव 3 बॉल्स which have not been tested yet, right? अब इसमें से हम लोग एक दो बॉल उठा के कर सकते हैं, राइट? अगर दोनों बॉल का वेट सेम आ रहा है मतलब दैट वाज अ डिफरेंट वन, और अगर दोनों बॉल का डिफरेंट आ रहा है देन विल हैव टू डू अनदर रेपिटेशन. आई थिंक विल हैव टू टेक दिस बॉल एंड देन मे बी कंपेयर विद एनी ऑफ द बॉल. तो उसमें फिर फिगर आउट हो जाएगा. एक्चुअली दिस इज अ वेरी परफेक्ट अप्रोच. नाउ आई जस्ट वांट टू आस्क, एनी किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा था क्या? बिकॉज like really good developers won't be able to like really you can say many people candidate have given this kind of interview
and they won't be able to answer this question. It's something like only about problem solving. It's not checking their DSA skill at that time, just कि आपका problem solving ability कितना है. So अब point ये है कि like जैसे अभी आपने आंसर दिया, so that is very perfect कि is that the like maybe you will have a better optimized process or something? I don't know, I'm just asking, like, no, I'm not as sure. far as I know, like this is the optimized solution. Like you can just pick 3 3 3. Otherwise, if you pick 2 2 2, तो वहाँ पे भी नंबर आपको वे बैलेंस ज़्यादा यूज करना पड़ेगा. Repetitions ज़्यादा. हाँ, मतलब आपको वे बैलेंस मल्टीपल टाइम यूज करना पड़ेगा. बट हमें मिनिमम वे बैलेंस को यूज करना था. सो दैट इज लाइक राइट थिंग. सो इट्स ऑल अबाउट योर एबिलिटी. एंड अब जब मैं डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बोलता हूँ, तो वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हैं हम कॉमन, क्योंकि अगर मैं लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट like if I'm talking about JEE exam, so JEE exam is also checking your aptitude, but on PCM. Right. But if I'm talking about companies want to test your aptitude, but on which? Because you will be doing development at the end in the company. So what they are doing is they are checking your aptitude in problem solving through these like problem solving on like programming, data structure, and algorithm, applying all these things. And already a lot of set are already available outside there. So इसलिए basically मतलब data structure is very important. It's like basically it's like real life problems. Like you ask me कि मुझे पहले किसी ने question दिया. I haven't faced this question, but I mean maybe I've solved reasoning problems earlier of similar sort, or maybe you know this is like just a life problem, right? जैसे कोई भी और भी चीज़ें problems आती है, reasoning, logical reasoning, तो इस तरह का ही problem था. So basically this is the, you're saying that this kind of logic is developed by DSA. If you are learning DSA, this kind of logic is tested and developed. You can say कि like at the end if you're solving aptitude and if you're doing DSA, तो it's what is happening कि आप you are doing the brainstorming, और वो brainstorming basically will be needing in a company. तो जैसे if I give you an example, like why you need to learn DSA, जैसे कि जैसे इन DSA we have different sorting algorithms. तो हम जब sorting की बात करते हैं, तो sorting का मतलब क्या होता है? If I give you some numbers, you need to arrange it either in increasing order or either in decreasing order. ठीक है? तो if I give you 5 4 3 2 1, now you need to sort it. तो 1 2 3 4 5. अब what DSA said कि there is a separate chapter on sorting DSA में. तो वो sorting में different techniques को समझाता है कि हमारे पे selection sort है, insertion sort है, bubble sort है, like and every algorithm has their own advantage and disadvantage. जैसे मैं selection sort के बारे में बोलता हूँ. Selection sort क्या कहता है? If you want to sort something, आपको क्या करना है? पूरा एरे लो, ठीक है, जो मतलब पूरे एक नंबर्स का अपना सेट लो, उस नंबर के सेट में से सबसे छोटा नंबर ढूंढ के निकालो. आपने छोटा नंबर निकाला, उसको पहली पोजीशन पे रख. अब बाकी बचे नंबरों में से सबसे छोटा नंबर निकालो, उसको दूसरी पोजीशन पे रखो. अब ऐसे ऐसे करके आप देख रहे हो, हम आखिरी में आप ये करते रहोगे तो हमारा एरे में सॉर्टेड मिल जाएगा. प्लेस मतलब करते जा रहे हो. एक इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम होती है. इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम सेड कि यू पिक फर्स्ट नंबर and see this thing, and उससे पहले whatever number are actually present before it, just put this number into the right position. तो आपने अगर पहला नंबर उठाया तो वो तो अपनी मतलब सही पोजीशन, क्योंकि उससे पहले कोई नंबर है ही नहीं. Now just pick the second number and compare with the previous one and put it at its right position. ये हम कार्ड्स में यूज करते हैं. तो आपने देखा होगा, like suppose some deck of cards are actually put on the table, and if I'm picking the first card, I'll put at my hand, then I'll pick the second card, I'll put at the right place. So now you understood the algorithm. और अगर कोई better card आ जाता है तो then we'll have to place it in the middle as right, well. Right, in the middle, right. So now is like in terms of real world application, insertion sort basically real time data के लिए बहुत अच्छा काम करती है. Right. क्योंकि अब जब अगर selection sort को देखो, selection sort में क्या हो रहा है, सारे नंबरों को फिर से एक बार ढूंढो, सारे नंबरों में, मतलब एक काम आप सारे नंबरों पर फिर से कर रहे हो, ठीक है. अब इन रियल टाइम डेटा मतलब कि ये मेरा जो नंबर का सेट है, इसमें कोई भी एक नंबर एक्स्ट्रा आ सकता है कभी भी. अब आ गया, रियल टाइम डेटा चल रहा है, तो इंसर्शन सॉर्ट उसको बहुत सही से काम करेगा, क्योंकि वो नए नंबर को लेगा, उसकी सही जगह पे उसको रख देगा. सो दीज आर सम एग्जांपल्स लाइक वेयर यू अंडरस्टैंड कि इफ यू हैव दोस काइंड ऑफ इनसाइट, तो आपको फर्स्ट व्हाटएवर प्रोडक्ट, व्हाटएवर एप्लीकेशन यू आर वर्किंग, उसके अकॉर्डिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट, देन यू नीड टू अप्लाई द एल्गोरिथम. इस तरह से. So मतलब my question is like next question is जैसे मान लो कि मैं डेवलपर हूँ, suppose I'm a developer and I am a React developer, let's say, and I have to create an app. So I will pick up a few like coding languages, basically pick up the interface
and then use libraries that there are libraries, right? So use the libraries and create an app. So it is technically possible to create an app without DSA as well. You'll agree, right? Right. So exactly, then why do I need then? I mean, if I can create that app without DSA, like आपने फिजिक्स मैथ्स का एग्जांपल बहुत अच्छे से बताया वो, तो उसी बेसिस पे मैं अभी फिर से पूछ रहा हूँ कि मैं ऐसे ही ऐप बना सकता हूँ मैं without DSA as well. Then why do I need to learn DSA to go into the product based companies? Okay. So basically, as you mentioned, कि you know like how to build the application and all. देखो, at the end, your application will be doing something. ठीक है. Suppose you are planning कि okay, I want to make an like Ola app. ठीक है. So now you know that कि at the end आप interface बहुत बढ़िया बना लोगे. So मतलब सारी cities वगैरह map वगैरह सब रख दोगे. But now the point where like Ola is actually cracking the problem, Ola or Uber, it's something or if I'm talking about Google Maps or anything, like suppose if I'm starting with Google Maps, तो आपने क्या करा, you put a destination. Now what the algorithm is doing, algorithm is actually computing the distance from that place to that point, and is giving you also all possible distances. But remember one thing, whenever you are making an app, तो अगर आप ऐप अपने लिए बना रहे हो तो बनाओ, ठीक है, बढ़िया है, बिना कोई DSS वो पढ़ने की जरूरत नहीं. लोगों के लिए बना रहे हो तो याद रखो लोगों में पेशेंस नहीं होता है. And if you are, because you need to understand one thing कि if like you need to solve this problem, what is the shortest distance? You need a data structure, आपको data structure की जरूरत पड़ेगी, और आपने कुछ भी randomly data structure choose कर लिया, ठीक है, तो आप देखोगे कि यार I'm actually getting stuck, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि अब ये वाली situation में हम क्या करें. तो पॉइंट यहाँ होता है कि पहले आप राइट डेटा स्ट्रक्चर कैसे चूज करोगे इस प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए. अगर बेसिक ऐप बनानी है, कैलकुलेटर, ये वाली चीज, तो यहाँ के लिए यहाँ ठीक है, यहाँ पे कोई बहुत एल्गोरिदम, बहुत खतरनाक एल्गोरिदम नहीं लग रही है. बट व्हेन यू विल बी वर्किंग ऑन सम गुड एप्लीकेशन, तो जैसे आप, मैं स्विगी एप्लीकेशन की बात करता हूँ. स्विगी एप्लीकेशन के लिए जो एल्गोरिदम है, व्हाट इज दैट एल्गोरिदम, दैट यू आर ordering the food, but the main challenge for the Swiggy is not like कि sending the order to the restaurant. मतलब whatever you are actually ordering, so that order first will go to the restaurant. But main challenge is finding the delivery partner. वो सर्च करता है और वो डिलीवरी पार्टनर नहीं मिला तो आपका खाना ही नहीं आएगा. और उसको सारा जो ओला का मेन, मतलब जो मेन स्विगी का मेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि डिलीवरी पार्टनर रहना चाहिए. ओला के लिए मेन प्रॉब्लम क्या है, आप देख लो किसी भी एरिया से, बेसिकली व्हेन यू आर बुकिंग कैब, यू आर गेटिंग द कैब. ऐसा कैसे हो रहा है कि बेसिकली कैब इज आल्सो गेटिंग अवेलेबल एट दैट पॉइंट. दैट इज द मेन, बिकॉज दे वांट कि हर स्पॉट पे कैब्स रहनी चाहिए. सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू क्रिएट द एल्गोरिथम लाइक दैट. And so they are also, just to like sorry, but they're also sort of using graph. They must be using graph or something, right, to find the nearby delivery partners, or they're using some other data structure. If right, वो ग्राफ ही यूज कर रहे होंगे ना, ऐसे एक पॉइंट से vantage point से दूसरे vantage point पे देखने के लिए. Exactly. मतलब हाँ, they might using graph कि like at which position that delivery partner is available, using tracking the GPS location. Even suppose अगर आप पे food गलत आया, अच्छा नहीं आया, you are raising the request to Swiggy. Swiggy, I have seen that Swiggy used to like refund very fast. ठीक है, but here there मतलब, but even if you talk to your friend, like they might like he or she might not get the refund like very early or very quickly. The point here is यहाँ पे भी Swiggy is actually using some kind of thing कि like some parameter. One of the parameter is like the sincerity factor of that user. हो सकता है ना आप बार बार वो चीज करते हो कि मेरा फूड सही नहीं है. You can posting some random photos and now Swiggy is giving you refund back. So they might have this trust factor or something in their side. So it's something like we need to keep on solving the problem. So even when you are working in a like actual product based companies, तो वहाँ पे क्या होगा, different situations आएंगी. And in those different situations, because there might be many users who are actually, who can see, you can call it an intruder, who are doing some wrong things. Okay, then how can you like track them? How can you catch them? So basically solving problem in scale. Yeah, like you can't keep going back to कि अच्छा मैंने ये लाइब्रेरी यूज करके बनाया था, अभी आगे मैं क्या करूँ. तो मतलब हर जगह प्रॉब्लम है, तो हर जगह you have to fix it with some algorithm or the other, and you have to have a bird view perspective, like a scratch understanding of the thing कि प्रॉब्लम ये है तो how can it
be solved. You cannot just keep going back to the library. Like you Right. mentioned. I just want to share one more example. Huh. When I was in like EA, so as a demo project, as a beginner, so what happened? They created a groups. और उन्होंने हमें एक like एक employee management system they actually told us to create, and they gave us the requirement. The requirement is something कि एक employee के नीचे कितने भी employees हो सकते हैं. Like one employee, there might be multiple employees. One employee under one. Suppose under CEO there is CTO. CTO under CTO there are another employee. Manager under manager there will be another employee tech lead or something like the hierarchy will be there. There might be many managers, okay, and you need to manage this information. Also, every employee who's getting coming into the company, that employee will also get some resource like laptop, table, and like all these kind of things. Okay, we also need to manage this information. अब उन्होंने बहुत सारी requirement दी थी. अब वहाँ पे वी नीड टू फिगर आउट कि ये मैनेजर वाला चीज हम कैसे मेंटेन करके रखेंगे, बिकॉज इन रन टाइम अ न्यू पर्सन कैन केम एंड ही विल बी इन सम अनदर मैनेजर. ठीक है, तो वी थॉट ऑफ यूजिंग ट्री डेटा स्ट्रक्चर कि विल यूज द ट्री डेटा स्ट्रक्चर. एंड कभी भी इफ एनी पर्सन इज आस्किंग अस लाइक इफ इन आवर प्रोग्राम यू आर आस्किंग अस हु इज द लाइक प्लीज टेल मी हु आर ऑल द एम्प्लॉयज अंडर दिस पर्सन. तो trees may basically there are different, you can say, traversing algorithms are there, right. Okay, through which you can traverse the complete tree and you can find all the nodes. Even suppose if I want to find all the employees of that manager जिनको laptop नहीं मिला, I will just traverse the list, but with a condition that if that person didn't get the laptop resource, then in that case just give me the list. So you can think that like even we are making simple employee management system, this algorithm application, we need to like we will be using some kind of data structure. So coming back to the MAANG companies, I mean everyone's dream these days is to work for Meta, Netflix. Previously it was faang, but now since Facebook changed to Meta, it's MAANG. Everyone wants to work for Google and Netflix and these kind of companies. So that's why we are doing this podcast. Even like once you know how exactly things work at their scale, why exactly do they need DSA experts, then it will be even easier for you and it will be like a motivation for you to learn and take the right roadmap to learn DSA basically. So coming back to Varun, वहाँ पे जैसे उन सारी कंपनीज में कैसी होती है चीज़ें, लाइक किस स्केल पे चीज़ें हो रही होती है, और वहाँ पे DSA, क्योंकि पहले भी हमने डिस्कस करा कि DSA बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट बेस्ड में, बट स्पेशली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी लाइक MAANG कंपनीज लाइक Meta, Netflix, where like anything if it breaks like the whole world comes to a stop. So what kind of scale are we operating at there in terms of like if we can, So basically I just want to give you one example and अब इस example के through you will understand that कि वो scale का मतलब क्या है, because it's the first time when I was dealing with scale is like when we got one project. Okay. तो उस project में क्या था basically we got the 75 GB of data, ठीक है, और वो data था basically Wikipedia का, Wikipedia pages data. Okay, we have like millions of Wikipedia pages in that file. Okay, so it is actually in XML format or something. So now we were having like उस Wikipedia के मतलब जो हमारे पे data 75 है उसमें शाहरुख खान, like सारे Bollywood star, like and everyone, look जो भी Wikipedia में whatever data is present, it actually contains all of it. Now the point here is what we need to do कि suppose if I am making a query that I want the pages of Mahatma Gandhi, okay, then it should search in that 75 GB of data and give me the result of all those pages which is related to Mahatma Gandhi. For example, the first page which it can give is of Mahatma Gandhi, like Mahatma Gandhi itself. Now the himself, and the second thing is the second page is like of like page related to India, like freedom of India or something. Okay, the third page is might be in Mahatma Gandhi. You can say mother's page. So things related to Mahatma Gandhi. Whatever things like related to Mahatma Gandhi, those pages should come. But in a sequence, like the first page should be like it should be very much relevant with that person, with the query which you have put. It's not just the person. You can also put Jaipur. Okay, so all the best like pages should come. Now the thing is कि that is a problem which we need to solve. अगर आप इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करोगे ना, तो इन दैट केस व्हाट इज द बेसिक स्टेप, मतलब बेसिक थिंग हमारे दिमाग में क्या आएगा अप्रोच, इट्स जस्ट दैट कि सपोज यू आर सर्चिंग समथिंग एंड वी नीड टू सर्च इन द 75 GB ऑफ डेटा, एक एक से सर्च करो. ओके, बट नाउ यू नो दैट कि आपका रैम 8 GB का है या 16 GB का है, 75 GB यू कैन नॉट पुट इनटू योर रैम, अब सिस्टम बंद हो जाएगा, हैंग हो जाएगा, क्योंकि रैम पे जगह आपने भर दी.
So basically we need to come up with some different problem solution. Okay, how we can solve this problem. So what we did is, जैसे आपने books में देखा होगा, like in the front page there is something known as indexing page, which used to say कि chapter 1 is actually present at this location, this chapter is actually at this location. So we created a indexing file, ठीक है, जो हमने बनाई थी. मतलब मेरा सिस्टम आई थिंक 12 घंटे के लिए कंटिन्यूस रन हुआ था उस इंडेक्सिंग फाइल बनाने के लिए. अभी वी हैवंट सॉल्व द प्रॉब्लम, वी आर जस्ट क्रिएटिंग अ इंडेक्सिंग फाइल. एंड हाउ द इंडेक्सिंग फाइल इज लुकिंग इज कि सपोज देयर इज अ पेज and in the left side you can imagine that there is a person named Shah Rukh Khan, and corresponding to Shah Rukh Khan we are actually putting all those page number जहाँ Shah Rukh Khan का नाम है. Page number 2, 4, 7, 7 lakh, 10,000, like all the numbers are actually coming here. Right. Now we have the complete indexing file. Okay, now you can tell me anything, like suppose you want to search for Apple. Okay, so now what we'll do is we'll directly go to the index file, we'll go to the A letter because we have also sorted the indexing file. We'll go to the app letter, Apple, and Apple के corresponding will get all the entries of the pages. तो जो मैंने 12 घंटे हमने इंडेक्सिंग फाइल में दिया बनाने के लिए, उसने हमारा डेवलपमेंट फास्ट कर दिया. एंड एट दैट पॉइंट how much time it actually basically, suppose if we want to do the search, तो later हमारा time कितना आ रहा था? We were getting the result in 7-8 seconds only. Okay. And even in Google, like if I'm talking about Google search engine, if you search like something 0.0001, right, so they are saying 0.00, so they have like a lot, high, very high, you can say that computing power. Yeah. And algorithm wise be like algorithm and computing both, they are actually going at the like top level. And the scale, like the massive scale and the data and everything, and you just type anything random you type, you're just gonna get the closest results to it, 0.0001 seconds. So and you have also heard this thing कि अगर किस दिन Google थोड़ा सा down हो जाए तो news बन जाती है. So you need to understand also this thing कि even when you are working that project, okay, these things like मतलब very much important for the company, because अगर एक दिन के लिए भी Google, even if it goes down for 1 hour, so it became a news. दुनिया रुक जाती है, मतलब news छोड़ो, दुनिया ही रुक जाती है. Yeah, that's true. Okay, this thing happens. So that's why, like, even so we need to understand one thing, कि even if I'm talking about MAANG companies, basically we are talking about big product-based companies. So even if I take an example of Adobe, तो Adobe basically whenever they used to release a product, तो वो ऐसी जनता के लिए release नहीं करते कि 500,000 people. They will release a product for the scale. Illustrator, Photoshop, like a lot of products which they used to release, because they ready to spend millions, like millions of cost on those things. So they are not there to make the Candy Crush like these kind of applications. So yeah, that's just out of curiosity, like you mentioned कि Google बंद हो जाए तो क्या होता है, मतलब just out of curiosity I wanted to ask, like let's say Google stops for 2 hours, 3 hours. I mean, apps like Swiggy, Uber, or anything that works on the map theory of it, so will they be affected, or do they have their own separate whole thing, location and map and geotagging, everything available? Okay. Like this is I think मतलब you're talking about Swiggy at the end using are they connected to Google Maps in a way, like are they fetching data from there, or are they like their own independent maps and they won't be affected? I think they are actually connected with that, because connected with that those things. अभी like I don't think मतलब अभी उनका एक separate है, because because even when we go to like these things, like these apps, so it actually redirects us to that Google Maps at the end. Even the rider goes to Google Maps to trace the location. So that's why. But but I think like they can trust on that part. So इसलिए basically MAANG companies के लिए like this is very important. They want people like who have that problem solving ability. And because you know that like how they are actually dealing at like very big scale, and वहाँ पे problems, things used to come, and it is like you have also seen one thing, मतलब कि one person who is working in Quora or any other companies, he will get into another product-based company very easily, because they know that he has actually already dealt with like a lot of good problems he has solved, he have solved already. So that is the main thing. So ये बाकी सारी चीजें fancy frameworks and all, it's something like जैसे जैसे industry बदलती है, frameworks used to change, but the main core thing is problem solving, which won't change like during the time.
And that is connected with DSA, like that is connected with how you can structure and how you can process. Yeah, so basically DSA is actually giving you way to think in terms of that. Okay, so suppose like if I take in situation like say I want to make a bank application, and not bank application. Suppose there is already, I'm taking example of SBI. Suppose there are 200 like millions of customers are actually millions of customers are there, and I want to pick like top 20 or top 100 customers जिनका you can say that जिनका deposit और you can say that कि ऐसे customers जो बहुत ज़्यादा active रहे हैं and जिनका balance बहुत active रहा है, positive flow में रहा है. It's something like I want to give some offers to them. Okay, so those people जिनका balance सबसे top में है या like कुछ और parameter भी हो सकते हैं. But my main problem is finding those top 20 on some category. Ab now you know that like the data we have like is something like of 10 million customers. अब 10 millions of customer का मतलब कि I will be having GBs of data. ठीक है. So अब मैं उस इतने customers में से वो top 10 कैसे निकालूंगा? अब now I need to think in terms of something कि like how can I solve this problem? So पहला अप्रोच आप यही सोचोगे अगर जो DSA जिसको नहीं आता वो the person will think कि okay I'll just run a complete loop and compare it with everyone. And it's some brute force like kind of a brute force approach, like compare with everyone, finding out. एक कहा जाता है अपने उसमें एल्गोरिथम वाले साइड में कि आपके बाल सफेद हो जाएंगे लाइक एल्गोरिथम फिर भी चलती रहेगी, बट ऐसा नहीं है. बट इट्स समथिंग लाइक कि है तो लिमिटेड ही इनपुट. So the point here is now if I come to the second optimized approach. So in optimized approach, what we used to do is whatever data set we have, like 200 like 100 million, like millions of customer of data, will break in buckets. 10. Suppose I made it 10 buckets or 100 buckets, anything. So individually, I'll sort this bucket individually. This bucket I'll sort it individually. This bucket I'll sort it individually. सारी bucket हमने individually solve कर लेंगे. क्योंकि I know that my RAM is of 8 GB, so I'll make a 4 GB buckets. Right. क्योंकि that 4 GB data can come into my RAM. Then what I'll do, जो भी मेरी 10 buckets हैं, उसमें से I'll pick the top element. I'll pick into my heap. Okay. So basically heap की property क्या है? I want to make a max heap or a min heap. It totally up to me. तो basically मैंने उसमें से क्या करा? Like I put all those element into those 10 elements from the top of all these buckets into the heap. Now what I'll do is I'll do the max operation. तो heap में एक property होती है like in the root always there will be a maximum element. Right. ठीक है. So accordingly what I will do is मतलब मैं min heap use कर लूँगा. तो min heap use करने के क्या करूँगा मैं, जो minimum element होगा उसको मैं basically हटा दूँगा. Okay. I'll remove that element and instead of that element उसको मैं replacement उसी bucket से निकालूंगा. जो वो element मैंने remove किया है वो किसी bucket से तो आया होगा, उसी से मैं दूसरा element निकाल के वहाँ पे करूँगा. और ऐसे operations हम लगाते हैं basically heaps को use करके. And इस heap के operation से basically सबसे advantage क्या रहता है, like it really solve your like problem very fast and time भी नहीं लगता, and it's something like your system will also not goes down. Right. So it's something like your problem solving approach, how you're applying it. Right. I mean, it's so logical. Like even as a non-techie, I feel like I can connect to these things. Right. I can learn DSA. I can connect to this. Like जो brute force का approach था उसमें मतलब even I would revolve around the world, but that would take a lot of time if there's like 200 million database every. So the sorting in the bucket thing and heap max. I mean, is the optimized way to do that. Yeah, basically. Right. Great. Okay, so now that we know that DSA is really important and how exactly is it used at scale, so can you give our viewers also like a few sort of insights on the DSA interviews that happen? Like मतलब क्या approach लेना होता है वहाँ पे वरुण? क्या approach लेना होता है DSA में? मान लो problem दिया किसी ने तो क्या approach better रहता है लेने का अगर उस तरह के interview में हो तो वो problem solve करना ही करना है या फिर क्या exactly देखते हैं वो लोग? Okay. So basically, when you are giving that interview, at that point, what they're doing is they first want to see कि how you actually process this problem. पहले तो हो सकता है अगर complex problem दिया है, what they want is कि आपको समझ में आया भी कि नहीं आया. Okay. So you told them कि okay, this is a problem. Okay, now understood. These are the some test cases. Now they want to see कि okay, now at what solution you will come up. जैसे I just share my experience like with Masai, like when I was giving the interview. And even like suppose for EA. So what happened, like that person actually gave me a problem. Okay.
and now in that problem like there is some array, and in that array I think I need to find all those, और उन्होंने array, मतलब मुझे जो problem statement याद आ रहा है वो ऐसा है कि कुछ publishers हैं जिन्होंने अपने रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं, एंड किसी के रिसर्च पेपर में बेसिकली किसी ने 2 करें, किसी ने 3 करें, तो कुछ कंडीशन उन्होंने दी थी कि मुझे ऐसे रिसर्च ऐसे निकालने हैं जिसमें विच फॉलोज दिस कंडीशन. आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर दैट पर्टिकुलर कंडीशन. तो व्हाट हैपेंड, आई वाज ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. I was thinking कि how can I solve it? I was randomly going through the different data structure. यार यहाँ पे ये वाला array लगेगा, ये stack लगेगा, ये queue लगेगा. तो मुझे दिख रहा था कि यार अच्छा नहीं, stack तो यहाँ पे omit हो जाएगा. मतलब I was omitting the data structure. Okay, this will not help here. Okay, so I gave some solution to that person. Then he said, okay, can you please implement it? So I just wrote the code on the copy. So after writing it, okay, can you please improve it? Then they want to see that like whether you're coming with some improved solution or मतलब कुछ improve दिखा सकते हो. So I was thinking कि कहाँ पे improvise लगा सकते हैं, तो हम improvise कैसे करते हैं. So there is some concept in like in DSA like time complexity and space complexity. तो I know that like okay the time complexity of this, तो हम हमेशा जो भी सोचते हैं time complexity के according सोचते हैं. वो अगर कम time लगा सकते हैं, हाँ, तो that is मतलब optimized है. तो उसी टाइम में सोच रहा था. इवन व्हेन आई वाज गिविंग इंटरव्यू विद मसाई, तो आई गॉट सम स्टैक प्रॉब्लम. एक प्रॉब्लम उन्होंने दिया, हमें कुछ एलिमेंट दे दिए और उन्होंने बोला कि नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, हर एलिमेंट का जो नेक्स्ट ग्रेटर है वो आपको निकालना है. इट्स ऐसा कोई समथिंग प्रॉब्लम था, लाइक सपोज 1 3 5 7 ऐसे कुछ एक एरे दे दिया, और फॉर एवरी एलिमेंट वी वांट टू फाइंड द नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट जो उस एरे में प्रेजेंट होगा. तो लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग. तो जैसे 6 1 2 7 8, ठीक है, तो 6 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर कौन है? 6 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर आई थिंक 7 है. सो बेसिकली आई वांट टू लाइक ऐसा कुछ था लाइक प्रॉब्लम, एंड आई वाज सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम, बट आई वाज थिंकिंग एंड आई वाज गिविंग द ब्रूट फोर्स टू दैट इंटरव्यूअर. देन ही सेड ओके कैन यू थिंक ऑफ एनी डेटा स्ट्रक्चर. पता नहीं मेरे दिमाग में कहाँ से आया स्टैक, मैंने स्टैक बोल दिया. देन सडनली आस्क्ड मी व्हाई यू थिंक ऑफ स्टैक, एंड देन व्हेन आई वाज ट्राइंग टू लाइक डिडक्ट कि ओके व्हाई आई सेड दिस, और जब मैंने लगाया तो स्टैक उसमें सही काम कर रहा था. क्योंकि स्टैक क्योंकि स्टैक लास्ट मेमोरी को याद रखता है कि इससे पहले बड़ा कौन था, तो मतलब वो एट द एंड वो काम कर रहा था. सो बेसिकली व्हाट द इंटरव्यूअर इज एक्चुअली लुकिंग यू, हाउ यूर प्रोसेस, हाउ वेदर यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम, हाउ यू आर प्रोसेसिंग इट, डू यू एबल टू क्रैक द बेसिक सॉल्यूशन ऑफ इट, नाउ हाउ विल यू इम्प्रूव इट. इफ यू आर इम्प्रूविंग इट, तो आप अब यहाँ पे गलती कर सकते हो, क्योंकि अब आप कोई भी डेटा स्ट्रक्चर बोलोगे तो वो पूछेगा वाई, यही क्यों सोचा, तो आप रैंडमली नहीं बोल सकते. सो दे आर जस्ट चेकिंग, क्योंकि काफी बार व्हेन आई वाज टेकिंग द इंटरव्यू ऑफ सम कैंडिडेट आई हैव सीन दिस थिंग, पीपल यूजिंग रैंडमली एनीथिंग, सेइंग रैंडमली एनीथिंग. तो जो इंटरव्यूअर होता है वो बहुत जल्दी पकड़ लेता है कि इसने ऐसे ही बोल दिया, इसको नहीं है, इसने सिर्फ वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रट लिया, बट देयर इज नो प्रॉब्लम सॉल्विंग आई एबल टू सी. So they want to see the process, right? Even I was reading an article by the pragmatic programmer. He's a good like it's a good blog. So वहाँ पे भी they were saying कि I mean take 2 cases they were taking, like a developer X and a developer Y, and the developer X, if they gave the problem, the developer X solved it in half an hour, but he used standard processes like tried and tested processes that he must have remembered or memorized or something. He used that process. The other developer Y was he actually was not aware of the tried and tested process, or what was the situation, I don't know, but he took 1 hour to solve that process, but he came up with a new approach. He came up with a new approach completely. So this guy took half an hour, this guy took 1 hour, but he came up with a new approach, and they preferred him over this X guy. So I think the process, the thought process that you're implementing there matters a lot. Okay, so I think we are towards the close now, and I think you have solved a lot of my doubts, and I'm sure their doubts as well. Now if a person is willing to learn DSA, right, and now they have made up their mind कि I have to go into MAANG or product based company and I have to learn DSA, तो what is an approach, like कहाँ से सीखे वो, क्या resources से सीखे, क्या एक optimized तरीका है सीखने का भी, इसमें भी optimization लगा रहा हूँ मैं, क्या optimized तरीका है सीखने का भी, like what kind of algorithms should they implement to learn algorithm? Okay, so the first thing is कि you should be aware of like some fundamental concepts of data structure, like sorting, arrays, strings, like all these kind of things. Right. You should be. So what you can do, you just need to understand the basics first. Okay. Now what you need to do is you need to come into like now problem solving. अब आपको problem solve करने पड़ेंगे. तो कुछ हमारे sets हैं already बने हुए हैं, already selected हैं. तो if you go to Google and you just type 200 must do questions, which is like
mostly asked by companies. Then what you need to solve all of those. Otherwise, what you can do, I have also done a webinar on like it's something like roadmap to DSA or something. वहाँ पे I have shared the approach from the basic, like how can you move ahead, how can you choose the topic, कौन से topic आपको cover करना है. I've also given that something like shown Excel sheet, what are the problem which you need to solve. But इसमें एक चीज है which you need to everyone need to remember is that at the end DSA is a problem solving. So one approach which I like suggest a lot is that whenever you are sitting with any problem, ठीक है, तो just sit with that problem, बैठे रहो, solve करते रहो, like but don't go to the solution. And क्या होगा, सिर्फ बैठे बैठे रहने से ना patience सीख जाओगे. And it's something like, because why I'm saying this thing, because when I was in my MTech, so my roommate was from EC background. So he was like done, what happened कि उसने पहली बार like he took na computer science in MTech. So he was not aware of that much things. So what happened, like he was implementing binary tree or something. And the commitment जिसके साथ वो MTech आया था कि मैं solution कभी नहीं देखूंगा, like I will follow a proper path, because BTech में उतना नहीं serious थे. So he was sitting with that problem and just thinking. तो थिंकिंग सिर्फ होता क्या है, लाइक एक दिन 2 दिन 3 दिन तो आपका दिमाग ना सारी डायरेक्शन में दौड़ना शुरू कर देता है कि कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, ये केस फेल हो जाएगा, और आप ना खुद गिर करके सीख रहे होते हो. इफ यू जस्ट प्रैक्टिस दिस थिंग ना, तो व्हाट विल हैपन, जस्ट हैव दिस थिंग कि आप में सॉल्यूशन नहीं देखोगे, तो आप देखोगे कि 3-4 दिन में ही, मतलब कुछ दिन में ही आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग जो माइंड है, आपका दिमाग कितना तेज हो गया है. वो हुआ इसलिए क्योंकि नाउ यू लर्न द पेशेंस टू सिट विद दैट प्रॉब्लम एंड थिंक. And that is known as problem solving. Right. So I'm not talking about only DSA. Even अगर आप कोई puzzle भी ले लो, puzzle के साथ आप सोचो, and you have seen these kind of differences with different students कि कोई ना बहुत जल्दी पकड़ लेता है किसी चीज को, कोई समझाओ, कोई थोड़ा टाइम लेता है. So कितना basically उसके mind को अब habit हो गई है, like how well the neuron forms. Even while solving maths and physics numericals in school, like trigonometry numericals, like we were advised to do the same thing. मतलब solution पे नहीं जाना, छुपा के रखो, पहले solve करना है. So that gives also a lot of satisfaction. So again, that is one keynote that you should take. Okay, so I think we have reached the end of this podcast, the DSA podcast. I hope you guys enjoyed it a lot. Just to summarize a few points, why exactly MAANG companies are hell-bent on DSA. So the first point obviously is that companies want to test your problem solving skills. That's one thing. Things happen at scale in companies. Like, I'm just paraphrasing what you said. Things happen at scale. If something breaks, they need a quick fix. They need problem solvers, and DSA, nothing signifies better like problem solving than DSA does, right? Also, I mean, you can't test a person's intelligence or problem solving through coding language का syntax or frameworks का knowledge. वो आपको DSA से ही basically आता है. Then these companies are like at scale and they are competing with each other. So they need to be, in order to like, creating a new product, the same company, the rival company is also creating a new product on the same lines. So it's also about pace, right? How fast you can build that product, and that's why they need a team of such skilled DSA developers who can create things fast and at scale. So if I have missed anything, you can add, Varun. And it was amazing. It was great. Like, you opened my eyes and hopefully a lot of other eyes of people. And guys, don't be scared of DSA. Embrace it. And if you want to go into product-based companies or MAANG companies, that is one thing that you must do. Yeah, thanks. Thanks, Kishan. Thanks, Varun.